वेलकम टू निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस विद क्विक स्टॉक्स। आज हम लोग थोड़ा थिंग्स को स्विच अप कर देते हैं। टुडे आई विल आल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स दैट लुक गुड ऑन द चार्ट, सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड ऑफ इट बिकॉज आई थिंक इट विल बी वर्थ इट फॉर यू। नाउ कमिंग टू निफ्टीज डेली चार्ट, हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा कैंडल फॉर्म किया है। वी कैन सी ओपन इक्वल्स टू हाई था, बट देन इट वाज एबल टू रिकवर अराउंड हाफ वे ऑफ इट्स डाउन मूव, व्हिच इज अ गुड साइन आई थिंक। ये गैप के एरिया में ही है। इट इज नॉट अबव यस्टरडेज हाई, and it is also actually below 16500, so those are not very good signs, but ठीक है, overall I think good, good price recovery from lower levels. अगर हम लोग drawings लाते हैं and moving averages hide कर देते हैं for Nifty, we can see that 16400 level was actually what gave it that support. Overall, 16350 still holds to be like an important zone in my view, because अगर हम लोग simple range breakout का देखते हैं, रेंज ब्रेकआउट में कैसा होता है, रेंज में रहता है, ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग जाता है, आई एम सेइंग जा सकता है। सो आई वुड पर्सनली नॉट रूल आउट अ बाउंस फ्रॉम समवेयर हियर। अगेन इट डिपेंड्स कितना स्ट्रेंथ है, बहुत बार ऐसा नहीं भी करता, बट अगेन दिस इज जस्ट व्हाट आई फील माइट हैपन। नाउ कमिंग टू एक्चुअली आज के जो इंट्रा डे प्राइस मूव्स थे, वी कैन सी कि कल जो इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट दिस जोन दैट इट मेड ऑफ 16420 ish, यही यहाँ से ही सपोर्ट लिया है। सो आई थिंक दैट इज अ more this would be a, yeah, this, it's a little hard to draw, but yeah, this, I think this is an accurate level. 16420 का जो level है, that was a good support, and obviously 16400 psych. So in terms of trades for the day, अगर आप trade कर रहे होते, I think on lower time frames, 15 minute, 5 minute and such, somewhere around here would have been a good time to enter. Previous close का भी support था, and I think it was good, so upside भी मिलता. Again, that's just my opinion. Another potential trade might have been here, ये जो लेवल है, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस तोड़ा, देन इट एक्चुअली कुड बिकम अ सपोर्ट। ये अलग बात है कि उतना मोमेंटम से बाउंस नहीं किया, बट वी कैन स्टिल सी ऑन एन ईओडी बेसिस इट्स एक्चुअली हेल्ड दैट लेवल, व्हिच इज अ गुड साइन. So let's see how that goes for Nifty. Another thing that we can see here is RSI 40. ठीक है, RSI 40. So with that, we'll just move to Bank Nifty's daily chart now. And Bank Nifty का daily chart हमें क्या दिखाता है? बैंक निफ्टी का डेली चार्ट क्या दिखाता है? विथ मूविंग एवरेजेस वी कैन सी 50 एम ए हैज स्टिल बिन रिजेक्टेड. ओपन 50 एम ए के ऊपर हुआ था, बट क्लोज इज एक्चुअली बिलो 50 एम ए. नाउ ग्रांटेड काफ़ी नीचे आया था, एंड निफ्टीज रेंज वाज अराउंड 200 पॉइंट्स. बैंक निफ्टी की रेंज देख लेते हैं क्विकली. या आई थिंक अराउंड 600 पॉइंट्स वाज बैंक निफ्टीज रेंज. सो काफ़ी बड़ा दिन था इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल मूवमेंट हैपनिंग. But the overall displacement, as you can see, is just 90 points for Bank Nifty, which is what, um, it's like काफी उतना उतना ज़्यादा नहीं है, right? So clearly not a very good sign. I think that's like 15% of the thing. So yeah, and in terms of the price levels, if I just show you, वी कैन सी कि 35,000 हैज़ बिन हेल्ड. अच्छा सपोर्ट मिला है. ये जो हम लोग जो जोन के बारे में बात करते हैं, ये रेंज के बारे में बात करते हैं, उससे अच्छा सपोर्ट मिला है. नाउ इन द केस ऑफ निफ्टी, ठीक है, निफ्टी में कैसा हुआ था, थोड़ा नीचे आया, ऊपर आके यहाँ पे ही रहा. बैंक निफ्टी में केस में कैसा है, काफ़ी नीचे आया, ऊपर आया, एंड देन थोड़ा सा एंड में ही थोड़ा फ्लैट हुआ है. सो आई थिंक वो केस में काफ़ी डिफरेंट है, विच इज़ ऑड. And then we can also see RSI 40 is not really crossed on Bank Nifty hourly chart. So those are a couple of things that I noticed. Now coming back to the daily chart, in terms of क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के साथ, आई थिंक अगर ये 35,000 का लेवल होल्ड कर पाता है, ये जो मैंने जो जोन दिखाया था आपको, देन आई थिंक इट इज़ अ गुड साइन. एंड I think momentum might just come above 35,500, 35,600. So let's see how that goes. Now we'll move on to the top stocks. Again, we have a lot to cover today, so I'll just be very quick and swift with this. We can see 50 MA support for Reliance. If we get the drawings back, we can see 2125 का जो level है उसके आसपास ही है. 2150 का level अगर hold कर पाता है, then I think it's a good sign. Getting a call, so I'll just silence that while I move to HDFC Bank. And it's an unknown number, that's fine. नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC बैंक. HDFC बैंक में हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली व्हेन निफ्टी वाज वेरी हाई, एंड व्हेन यूफोरिया जैसा था मार्केट में, एट दैट टाइम HDFC बैंक वाज एट दीज लेवल्स. इनफैक्ट इट हैज बीन एट दीज लेवल्स सेवरल टाइम्स व्हेन निफ्टी वाज डूइंग फेयरली वेल.
and it is still here only 1530 के आसपास. So I think it definitely has potential to pull Nifty up, but वो momentum नहीं आ रहा, because we can see, any time. Okay, I'll just do this. Any time we have seen HDFC Bank near this level, it has inevitably failed. ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जिधर एच डी एफ सी बैंक फेल किया है. सो आई थिंक अ सस्टेन ब्रीच ऑफ दिस लेवल माइट जस्ट मीन दैट निफ्टी, एंड इवन दो दिस साउंड्स वेरी बोल्ड, माइट जस्ट मीन दैट निफ्टी रियली गोज नियर 16800 ish levels sooner than later, possibly even 17,000. Again, काफ़ी far fetched statement लगता है, but let's see. Reliance है इधर. Reliance अगर जाता है 2200 क्रॉस करता है, then half the battle is already won, and then we have HDFC Bank. So that's my view. Now coming to the other stock, which is Infosys. Infosys में हम लोग देख सकते हैं, I'll actually hide the moving averages. Infosys में we can see 1744 का जो resistance मैंने mention किया था fib extension में, that is still holding. So let's see. Close above that might be a good sign for Infosys. We can see RSI is sort of chilling at around that 75-80 level. Next stock is HDFC. HDFC we can see again it's stalling as of now. If I just have to sort of draw these lines, we can see कि एक्चुअली मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करता हूँ, वो थोड़ा और प्रिसाइज हो जाता है इंस्टेड ऑफ दिस. सो वी कैन सी दिस अप्रॉक्सीमेट लेवल राइट हियर, 2770, ये वाला जो जोन है वो वहाँ पे ही अटक रहा है. एंड देन द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दैट वी हैव इज समवेयर अराउंड हियर. ठीक है, समवेयर अराउंड हियर. सो समवेयर अराउंड 2680 वुड बी वेयर आई वुड बी लुकिंग एट फॉर HDFC Bank, rather HDFC, not HDFC Bank. Next stock that we're looking at is ICICI. ICICI, we can see good holding above 682. This is somewhat similar to the range breakout thing that we had discussed earlier. So ऊपर 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 आया, एक्चुअली रेंज ब्रेकआउट नहीं, ये रेंज ब्रेकआउट नहीं है, but it is still similar, and then it retested the resistance and now it is going up. So let's see how that actually goes. नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर लुकिंग एट इज कोटक बैंक. कोटक बैंक हम लोग देख सकते हैं 1700 से सपोर्ट लिया है, RSI 40 approximately था. And again, this has been a zone we've spoken about it a few times, so that is a good sign as well. Next stock we're looking at is SBI. SBI 405 का जो support था उसको hold किया. Again, that's a good sign. Similar to Kotak, it's like a range, right? This range, this zone that's there, that has been respected. RSI 40 के नीचे, I think that's not a very shabby sign given कि आज का candle है काफ़ी अच्छा है price rejection low से. We can see around 8 points of climb, and the entire range for the day was around 12 points. So I think that's a good sort of distance covered. Around 75% of the distance has been covered, which is a good sign. Next stock we're talking about is Axis Bank. Obviously, end nahi kar rahe video. We are still talking about a couple of stocks that I have in my mind. So Axis Bank, we can see 736-ish levels appear to be looking good. So that's a good sign. Now I want to talk about Tata Motors. Tata Motors की बात करना है मुझे, because if I just show you the moving averages, then we can see it is at 200 MA. So previously I've said that 280-ish levels are good for Tata Motors. Now that has been broken, but I think 200 MA is a very important sort of zone. We can see in the past around 24th September, so लगभग एक साल पहले ये level आया था, and now it is coming again. So it's come quite a long way, and this is largely because moving averages work in two ways. I know this is a bit of a theory lecture, but जब भी ऊपर जाता है तभी जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज आता है वो स्लोली 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 ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है. एंड देन व्हेन अ लिटिल स्टैग्नेशन कम्स, that is when it sort of meets it. So it's not really because Tamo has been going down, or it has been going up consistently. It's just because ऊपर आके थोड़ा flat हो गया. I think this is a very interesting level अगर hold कर पाता है. तो next stock we're talking about is Motherson. ये भी 200 MA के आसपास है. इनफैक्ट वी हैव दिस प्राइस जोन ऑल्सो ऑफ 197 इट्स, 200 रीटेस्ट जितना भी है, which was actually the closing price for today. RSI is very low. RSI is at 18. So again, not really sure what the reason for this is. It just caught my eye, so I thought I'd mention it here. Next stock we're talking about is Hindalco. Getting another call. I'll have to answer it later. 50 MA पे है Hindalco, which is okay. Yeah, call has been silenced. 50 MA पे है Hindalco, which is a good sign in my view. Now the not so good thing is कि ये जो parallel channel है that has been broken, but I think overall it does it does make decent sense. 50 MA RSI around 40, and what we can see here, if I just zoom in,
we can see general this sort of support being taken, and 400 levels के आसपास ही है, 400 psychological level. So I think that is also good. Finally, I want to talk about Bandhan Bank. Bandhan Bank का weekly chart देखते हैं, and we can see that it is right at 38.2 level. Right at here. So I think in the coming weeks, Bandhan Bank might just be a very interesting stock to look at. But yeah, that's about it for this one. By the way, if you're curious how I invested, and this is an actual video, how I invested in gold for under 40 rupees in under 20 seconds, make sure you check the shorts that I uploaded yesterday. That's it for this one. See you in the next. Happy trading. Happy rest of the week.